MCQ क्वेश्चन नंबर 262 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 262 पूछ रहे हैं, ए पेशेंट रामू प्रेजेंटेड विथ हेमेटोरिया फॉर मेनी डेज ऑन इन्वेस्टिगेशन इज फाउंड टू हैव रेनल कैल्कुलाई calcification in the wall of the urinary bladder and small contracted bladder. Most probable cause is, ठीक है ना। तो पेशेंट विथ हेमेटोरिया फॉर सेवरल डेज, ठीक है ना। ऑन इन्वेस्टिगेशन इज फाउंड टू हैव रेनल कैल्कुलाई ऑन इन्वेस्टिगेशन the patient is found to have renal calculi. There is renal calculi and calcification in wall of urinary bladder, ठीक है ना। then calcification in wall of urinary bladder and small contracted bladder स्मॉल कॉन्ट्रैक्टेड ब्लैडर मिल रही है। तो डायग्नोसिस क्या है? ऑप्शन 1 सिस्टोसोमियासिस, ऑप्शन 2 एमिलॉइडोसिस, ऑप्शन 3 ट्यूबरकुलोसिस, या ऑप्शन 4 यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। फिर से देखिए, पेशेंट विथ हेमेटोरिया फॉर सेवरल डेज ऑन इन्वेस्टिगेशन you have renal calculi and calcification wall of gallbladder and small contracted bladder. What is the diagnosis? Schistosomiasis, amyloidosis, TB या urinary bladder cancer? And the right answer is schistosomiasis. क्वेश्चन 263 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 263, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? A patient present with hematuria of several day and dysmorphic RBC cast in urine. Site of origin is, ठीक है ना। तो पेशेंट में क्या हो रही है? हेमेटोरिया फॉर सेवरल डेज, ठीक है ना। एंड डिसमॉर्फिक आरबीसी कास्ट विथ डिसमॉर्फिक आरबीसी कास्ट इन यूरिन, ठीक है ना। तो साइट ऑफ ऑरिजिन क्या है? ऑप्शन 1 किडनी, ऑप्शन 2 यूरेटर, ऑप्शन 3 ब्लैडर, या ऑप्शन 4 यूरेथ्रा। पूछ रहे हैं हेमेटोरिया हो रही है बड़े दिनों से और डिस्मॉर्फिक आरबीसी कास्ट मिल रही है यूरिन में, तो घाव कहाँ पे हुआ होगा या फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में। एंड द राइट आंसर इज किडनी में। डिस्मॉर्फिक कास्ट मिल रही है तो किडनी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 264 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 264 क्या पूछ रहे हैं? नॉट ट्रू अबाउट पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन इज, ठीक है ना। पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन, all true except option 1 retrograde pyelography is useful to locate the site of obstruction. Retrograde pyelography is done to locate site of obstruction, retrograde pyelography is to locate obstruction site. Option 2 endoscopic pylotomy is contraindicated. Endoscopic pylotomy is contraindicated. Option 3 Whittaker test is of clinical significance. Whittaker test is of clinical significance. The option 4 dismembered pyeloplasty is the procedure of choice. Dismembered
Pyeloplasty is procedure of choice. फिर से देखिए, PUJ obstruction, all are true except retrograde pyelography is to locate the obstruction site. Endoscopic pyelotomy is contraindicated. Whittaker test is of clinical significance. A dismembered pyeloplasty is procedure of choice. And the right answer is option B. Endoscopic pyelotomy is not contraindicated. ठीक है ना, एंडोस्कोपिक पायलोटोमी इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लेकिन PUJ ऑब्स्ट्रक्शन में रेट्रोग्रेड पायलोग्राफी इज टू लोकेट द ऑब्स्ट्रक्शन साइट. व्हिटेकर टेस्ट इज ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड डिसमेंबर्ड पायलोप्लास्टी इज प्रोसीड्यूर ऑफ चॉइस. क्वेश्चन नंबर 265 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 265 क्या पूछा है? नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रूवाइट स्टोन्स. स्ट्रूवाइट स्टोन all true except. About struvite stone, all true except. Option 1, better known as staghorn calculus. It is known as staghorn calculus. It is known as staghorn calculus. Option 2, these are triple phosphate stone. They are triple phosphate stone. Option 3, these are common in infected urine. Most common in infected urine. Option 4, usually seen in acidic urine. फिर से देखिए, स्ट्रूवाइट स्टोन ऑल ट्रू एक्सेप्ट, known as staghorn calculus, triple phosphate stone, most common in infected urine, seen in acidic urine. And the right answer is D. It is not seen in acidic urine. But struvite stone are known as staghorn calculus. They are triple phosphate stone and most commonly found in infected urine. Question number 266 देखेंगे. Question number 266. Sheila, a middle-aged diabetic female, presented with flank pain and fever. On ultrasound, the kidney was irregular and showed fat density lesion with calculi. The diagnosis most probably. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मिडिल एज्ड डायबिटिक फीमेल complaints of flank pain and fever. On ultrasound, the kidney was irregular. अल्ट्रासाउंड किडनी किया गया तो क्या मिल रहा है? इरेगुलर किडनी with fat density lesion. With calculi. ठीक है ना, तो डायग्नोसिस क्या है? ऑप्शन 1 टीबी किडनी. ऑप्शन 2 xanthogranulomatoous kidney. ऑप्शन 2 xanthogranulomatoous kidney. ऑप्शन 3 chronic pyelonephritis. ऑप्शन 4 renal abscess. फिर से देखिए, मिडिल एज डायबिटिक फीमेल complaints of flank pain with fever. Ultrasound kidney show irregular kidney and fat density lesion with calculi. What is the diagnosis? TB kidney, xanthogranulomatoous kidney, chronic pyelonephritis and renal abscess. And the right answer is B, xanthogranulomatoous kidney. It is a xanthogranulomatoous kidney. क्वेश्चन 267 देखेंगे. 267 क्या पूछे लोग? A patient presented with renal cell carcinoma invading inferior vena cava and renal vein. False statement is. ठीक है ना, तो renal cell carcinoma invading inferior vena cava and renal vein, all are true except option 1 pre-op biopsy is not necessary. Pre-op
biopsy not needed. Option 2, IVC involvement indicate inoperability. IVC involvement means inoperable. Option 3, pre-op radiotherapy is not essential. Pre-op radiotherapy not required. Option 4, chest X-ray should be done to rule out pulmonary metastasis. Chest X-ray done for ruling out pulmonary metastasis. फिर से देखिए, RCC invading inferior vena cava and renal vein, all are true except pre-op biopsy is not needed. Inferior vena cava involvement means inoperability. Pre-op radiotherapy is not required. Your chest X-ray is done for ruling out pulmonary metastasis. And the right answer is B. IVC involvement doesn't mean inoperability. IVC involvement doesn't indicate inoperability. Question number 268 देखिए. Question number 268 ये पूछ है, a female patient present with hard mobile lump in her right breast. Which investigation would be most helpful in making on diagnosis? तो female present with hard mobile lump on right breast. ठीक है ना? तो उसमें बोल रहा है कि which investigation will be more helpful in making on diagnosis. तो investigation for diagnosis कौन सी होगी? FNAC. Option 2, needle biopsy. Option 3, excision biopsy. Option 4, mammography. ठीक है ना? फिर से देखिए, female with hard mobile lump on right breast, investigation for diagnosis, FNAC, needle biopsy, excision biopsy, mammography. And the right answer is excision biopsy. Question number 269 देखेंगे. Question number 269, not true about varicocele is. तो varicocele ठीक है ना, इसके बारे में all true except. Option 1, common on right side, most common on right side. Option 2, can present as a late sign of renal cell carcinoma. Option 3, has bag of worm-like filling. Option 4, can lead to infertility. Physical varicocele, all are true except most common on the right side, late sign of renal cell carcinoma, bag of worm-like feeling, या lead to infertility. And the right answer is A. Most commonly right side में नहीं होती है, right side में नहीं होती है, लेफ्ट साइड में होती है. क्वेश्चन नंबर 270 देखेंगे. 270 पूछा, नॉट ट्रू अबाउट कार्सिनोमा पेनिस कैंसर, all true except. Option 1, erythroplasia of Querette is a precancerous condition. Erythroplasia of Querette is precancerous. Option 2, 40% of patient are under 40 years of age. 40% patient are less than 40 years age. Option 3, circumcision if done any time before puberty provides 100% protection against carcinoma penis. So circumcision before puberty gives 100% protection. Option 4, more than 50% patients have inguinal lymph node enlargement when they present. More than 50% present with inguinal
lymph node enlargement. फिर से देखिए penis cancer, all true except athyoplasia of Coirate is a precancerous condition. 40% patients are under 40 years of age. Circumcision before puberty gives 100% protection. You have more than 50% patients present with inguinal lymphadenopathy. And the right answer is C. Circumcision don't provide 100% protection. Circumcision don't provide 100% protection.